Xerosere is the succession process on a bare rock. When the bare ground is colonized by a series of plant communities, the primary succession is called as xerosere. Or there are different stages of xerosere. Named as crustose lichen stage, foliose and fruticose lichen stage, moss stage, herb stage, shrub stage, tree stage, and ultimate climax stage, which will be a forest. So आप देखो दोनों ही conditions के अंदर whether it is an succession in a water body or it is a succession on a bare rock, the climax community is the development of a forest which will be developing under the moderate conditions, that is the mesic conditions. Have you read about the different types of lichens? पढ़े हैं आपने lichens की different types? Crustose, foliose, fruticose. पढ़े हैं ये आपने पहले lichens? हाँ जी, कोई जवाब तो दे मुझे. यस मैम, पढ़े हुए हैं. पढ़े हुए हैं. तो आप आंसर क्यों नहीं करते कि मैं पूछ ना लूं कुछ है? पढ़ते आप हैं पर याद नहीं रखते, ऐसा ही है? यस मैम, वो अच्छा चलें. The typical example जो xerosere की है, that is the process of succession on a bare rock. ठीक है, जो first stage of plants which will appear on that bare rock, that is a crustose lichen stage. ठीक है. And bare rock किस तरह की एक surface है? It is a solid surface with no soil. उस पे कोई soil जो है वो नहीं होती, एक solid surface होती है simply. एंड इस तरह की सरफेस के ऊपर कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एस्टैब्लिश हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं? दे विल बी द थैलाई ऑफ क्रस्टोज लाइकन्स. ठीक है, क्रस्टोज लाइकन्स कैसे लाइकन्स होते हैं? दैट कंप्लीटली अडहियर टू द सरफेस, कंप्लीटली अडहियर टू द सरफेस. जिस तरह से पेंट नहीं आप करते किसी चीज के ऊपर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट दीज आर completely, they are in contact with the surface. So we can say they are adhere to the surface of the rock, like the paint on a wall or paint on a rock. Now when they obviously how they will come on that rock, मैंने जैसे पहले बताया कि जो dispersal agent है wind होगा. विंड जो है वो उनके प्रोपेग्यूल्स को, उनके स्पोर्स को उस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर लेके आती है. दे सेटल ओवर देयर, दे देन स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर. जब वो वहां पे ग्रो करने लगते हैं, ऑब्वियसली दे नीड सर्टेन वाटर, सो दे स्टार्ट absorbing moisture from the atmosphere. So then these lichens, when they are growing on the rock, they will प्रोड्यूस सर्टन एसिड्स. ठीक है, रेस्पायर तो वो करेंगे ना, रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और जो मॉइस्चर एयर की है रॉक की सरफेस के ऊपर, उनके मिक्स होने से रिएक्शन होगा और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा. एसिड्स जो हैं दे ऑलवेज देयर फंक्शन इज टू क्रोड, सो वीकन करेंगे उसको, उसकी ब्रेकेज का बाइस बनेंगे, तोड़फोड़ का बाइस बनेंगे. So the acids which are produced by these lichens, they will weaken the rock. There एक तो ये होगा कि rock जो है वो weak होगी, तो उसमें थोड़ी corroding होगी, breakdown होगी. As a result, rock जो है it will start converting into soil. Their thalli, they will collect the wind blown soil particles. उनके जो thalli हैं वो हवा में उड़ने वाले जो soil particles हैं उनको collect करेंगे, ट्रैप करेंगे. a thin layer of soil जो है वो उस रॉक के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाएगी. these lichens obviously इनका लाइफ स्पैन जब पूरा हो जाएगा, they will die.
When they will die, the decomposition of their thalli will add humus to the rock, and as a result, a thin layer of soil will become established on the rock surface. So you see, the soil building process is promoted like this, and now the environment will become suitable for the growth of the lichens of the next stage. यानी इनके जब ये आए थे क्रस्टोस लाइकन्स, तो उस वक्त तो सॉइल की कोई उस पर लेयर नहीं थी और रॉक जो थी वो इंटैक्ट थी. इनकी एक्टिविटी से क्या हुआ कि रॉक जो है वो भी थोड़ी सी डिसॉल्व होनी शुरू हो गई और उसकी क्रोडिंग शुरू हो गई. प्लस इनके जो थैलाए थे उन्होंने सॉइल पार्टिकल्स को भी ट्रैप करना शुरू किया, और इनकी अपनी जो डेथ और डिकम्पोजिशन थी उससे भी ऑर्गेनिक मैटर जो है प्लस सॉइल जो है वो रॉक की सरफेस पे डेवलप होगी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कंडीशंस जो हैं इनके अपनी सर्वाइवल के लिए तो अनफेवरेबल हो गई, बट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द नेक्स्ट stage of lichens, that is foliose and fruticose lichens, it become favorable. Now जैसे आप कह रहे हो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको शायद रिकॉल कर लें कि व्हाट इज फोलियोस लाइकन. फोलियोस मींस लीफ. तो ये ऐसे लाइकन्स हैं विच आर लीफ लाइक, देयर थैलस इज लीफ लाइक, दे आर अटैच्ड to the substratum from a number of points, while in case of fruticose lichens, which are bush-like lichens, they are attached to the substratum from a single point. So they are they attached to the bottom, so they don't cover the soil completely, क्योंकि कम कुछ ही पॉइंट से ये सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, so ये completely soil को cover नहीं करते. They can also absorb and retain moisture. So compared to the crustose lichens, they can absorb and retain more water, and they are able to accumulate more dust and soil as compared to the previous stage of crustose lichens. Their dead remains डिकम्पोज टू द ह्यूमस. उसी तरह से इनकी डेथ के साथ ही इनकी बॉडीज की भी डिके शुरू होगी, तो एज अ रिजल्ट द ह्यूमस विल बी एडेड इन द सॉइल. The soil building process will be further in progress. Shallow depression on the rocks, they will become filled up with this soil. So as a result, the thickness of the soil increases further. Autogenic changes which are brought about by these lichens themselves will favor the growth of the mosses, which is the next stage of xerosere. Now, the third stage of succession, that is the establishment of mosses, will take place. The spores of xerophytic mosses like Polytrichum, Tortula, they are brought to the rock by the air. Their rhizoid penetrate into the soil. The respiration of the roots, it will produce the acids which will further corrode the rock. The bodies of the mosses, they are rich in organic and inorganic compounds. When they die, they add compounds to the soil, and as a result, the fertility of the soil will be increased. So these are all the changes which are being brought about each particular stage. Soil building process will continue. Changing in the environment will lead to the development of herbaceous vegetation. Now the enough thickness of soil has reached that the next stage of cereal stage, that is the appearance of the herb, will take place. Now the herb stage, it consists of herbaceous weeds, mostly first the annuals, they will appear, aster, milkweeds, etc. They will invade the rock. Their roots will penetrate deep down. Comparatively, they will be having some thickness, more thickness of the soil. So their roots, they will penetrate deep into the soil. They will also secrete acids, and this will enhance the weathering process of the rock. Leaf litter and death of the herbs will add humus to the soil further. Shading of the soil results in decrease in evaporation.
and there will be as the evaporation will be slowed down, so there will be a slight increase in the temperature. So the temperature of the substratum will increase, xeric conditions begin to change, and now the biennial and perennial herbs, they will appear. After the first appearance was that of annual herbs, and after the annual herbs, the biennial and perennial herbs, they will start appearing, right? And along with that, certain xeric grasses, they will also inhabit the area. Usme festuca hai, aristida hai, these grasses, they will appear. Growth of bacteria and fungi will be promoted, and now due to the appearance of bacteria and fungi, the decomposition activity will also speed up. Now the conditions which I have just uh, told you, they will now favor the appearance of the next stage, and that will be the shrub stage. Okay, shrub stage will appear. Shrubs are the plants which are herbaceous above, and they have, their stems are herbaceous above and woody below, and they are comparatively taller than herbs. So herbs and grasses mixture, it is now invaded by the shrubs. और shrubs में से भी कौन सी shrubs which are called as the scrub. स्क्रब कैसी shrubs होती हैं? वो densely packed bushes with stunted growth due to scarcity of water, यानी इनकी बहुत ज्यादा profusely branched होती हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, यानी कि हाइट में छोटी रहती हैं, ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, और इनका रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो भी हाई होता है. अर्ली इन्वेजन ऑफ स्क्रब इज स्लो, बट आफ्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट द बर्ड्स दे विल आल्सो इन्वेड द एरिया, और जब बर्ड्स आ जाएंगे तो दे विल हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड्स. इसके साथ साथ soil formation process will also continue, moisture content will be enhanced, the herbs, they will now disappear, the environment will become mesic, that is, it will be moderately moist, and now the conditions become favorable for the appearance of the next stage, and that is the tree stage. Large shrubs, small trees, they will now appear. मैम कर दें. जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? नो मैम का थक गए हैं, बस कर दें. अच्छा चलो, ये बस ये एक आध स्टेज इसकी रह गई है. कितनी है? 7 है ना टोटल. फिर उसके बाद चलिए हम tree stage, changes in the environment now favor the colonization of tree species. Tree saplings begin to grow among the scrubs and establish themselves. Kind of trees depend upon the nature of the soil. अब आपको पता है ना, डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट हैं, और वो हर एक फॉरेस्ट की अपनी ट्री स्पीशीज हैं, तो ये नेचर ऑफ सॉइल जो है वो डिटरमिन करेगी कि कौन किस तरह की ट्री स्पीशीज जो है वो उस एरिया में डेवलप होंगी. And trees, they will form the canopy and shade the area. Leaf litter and decaying roots weather the soil further and add to the humus. Habitat become more favorable for tree growth. Mosses, अब ट्री की जो अंडर स्टोरी है उसमें क्योंकि शेडेड हो गया एरिया, तो एज अ रिजल्ट शेड लविंग प्लांट्स जिसमें मॉसेस एंड फर्न्स जो हैं वो उनके नीचे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ डिकम्पोजर्स, फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं उनका नंबर भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा. अल्टीमेटली द लास्ट स्टेज, दैट इज the climax stage, a forest, it will become established. Succession will culminate or end in the appearance of a climax community, which will be a forest. And now the forest type will depend upon the climatic conditions. It will be a oak hickory climax forest. It will be a beech hemlock climax forest. It will be a spruce alpine climax forest.
it will depend upon the climatic conditions of that particular area. ओक हिकरी क्लाइमेक्स फॉरेस्ट ये कहाँ पे अपीयर होगा? इन केस ऑफ अ ड्राई हैबिटेट। अगर तो ड्राई हैबिटेट है तो जो ट्री स्पीशीज वहां पे अपीयर होंगी वो ओक और हिकरी ट्री स्पीशीज जो है वो अपीयर होंगी। एंड देयर विल बी ओनली वन ट्री स्टेज। अदर वेजिटेशन जैसे स्क्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, फर्न्स, मॉसेस, दे विल आल्सो बी प्रेजेंट। जो भी उन ट्रीज के अंडर शेड टॉलरेंट प्लांट्स हैं वो वहां पे अपीयर हो जाएंगे। एंड इफ द कंडीशंस आर मीजिक, ठीक है, तो फिर बीच हेमलॉक क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होगा और उसमें बीच और हेमलॉक के जो ट्री हैं वो डोमिनेट करेंगे और उसके साथ दूसरी जो वेजिटेशन है, हर्ब्स, फर्न्स और मॉसेस, वो भी वहां पे मौजूद होंगे। देन कम्स द स्प्रूस अल्पाइन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर माउंटेनस एरियाज में ये अपीयर होंगे और उसमें ट्रीज जो हैं स्प्रूस के ट्री और अल्पाइन के जो ट्री फिर्स वगैरह जो हैं ये वहां पे आपको मिलेंगे। माइक्रो सक्सेशन और सीरियल क्या है? ये एक टर्म है छोटी सी। इसमें सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा, अगर इनकी आप स्टडी करोगे तो ये माइक्रो सक्सेशन कहलाएगी। और ये कहाँ पे इस तरह की सक्सेशन का हैबिटेट क्या है? ये सक्सेशन जो है ये किसी डेड ट्री के ऊपर, किसी एनिमल ड्रॉपिंग के ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं और इनकी वहाँ पे सक्सेशन स्टडी आप वहाँ पे कर सकते हो इन हैबिटेट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा चलें आज इसमें